Hello friends, my name is Ashima Agrawal from BP Educators. Today we are going to discuss about advanced filters. We already studied about filters. Now let's see what is advanced filters. Advanced filters is basically used to extract data from given table. Now let's use it practically. First click on sample data. जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है. इस टेबल में आपका ऑर्डर डेट रीजन रिप्रेजेंटेटिव आइटम यूनिट्स यूनिट कॉस्ट एंड टोटल के कॉलम्स हैं. अब हम लोगों को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है आइटम बेस पे, जिसमें से हमें बाइंडर नाम के आइटम का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? फर्स्ट create a new sheet, then go in data tab and click on advanced. In this you are seeing two options: filter the list in place and copy to another location. Filter the list in place we already studied. Today we are going to study about copy to another location. So let check it. There is three parameters: list range, criteria range and copy to. So let's see what is list range. In list range you need to select entire table for extracting data, and in criteria range you need to select your given criteria. जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है आइटम एंड बाइंडर के नाम से. बाइंडर is the item name which we need to extract. So select item and binder. In copy to parameter we need to select area where we need to extract the data. So let's select the area. आप एक और ऑप्शन देख रहे हैं यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली. यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली को हम तब चेक करेंगे जब हमें एकदम यूनिक डेटा चाहिए होगा जो एक दूसरे से मिलता जुलता ना हो. अगर हमें हमारा कोई ऐसा कंडीशन नहीं है तो हम इसे अनचेक कर देंगे. नाउ लेट्स क्लिक ऑन ओके. एज यू सी हमारा आइटम बाइंडर का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया है और हमारी पहले वाली टेबल एज इट इज है. तो आप एडवांस फिल्टर में इस तरीके से कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आपका पहले के डेटा को अफेक्ट नहीं होगा. Hope I made it myself clear. If any doubts or queries, you can contact us on given mention ID and email and phone number. Thank you.